So guys, this is the view of this place, as you can see. जय मुरुदेश्वर महादेव। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर। ओ, यहाँ पे गार्डन है, नाइस गार्डन। पानी वगैरह स्प्रे हो रहा है इधर। ओ, पानी आया। पानी ఎప్పుడు పొప్పాడుచువేసి looking beautiful, as you can see. So now we are heading towards this Shiva statue, as you can see, the world's second largest Shiva statue. It's of 123 feet. Statue, 123 feet. This is the Nandi. So as you have seen, this is the Shiva statue. This is Nandi and this is the statue behind me. And if anyone wants to visit this place, they can come and enjoy for a whole day. You can enjoy at the beach, you can enjoy at the temple. So this is the background, if you can see, this is the garden. So everything is been taken care by RNS group, that is R.N. Shetty group. So if you like this video and you enjoy it, please like. So here is the Shiva temple and you can enjoy the view from here. This is the beach. This is the Raja Gokulam. ए मामा, ओला का नाम क्या था? राजा गोपुरा। राजा गोपुरा क्या? मास मैंडेटरी और देखिए। नंदी महाराज विथ राजा गोपुरा। This is the cave which is there just below the Shiva statue, and you can just see of this place, which was narrated in just with the statues. So when Ravana was there, he was a very big devotee of God Shiva.
So at that time when he was taking the idol of Shiva from to Sri Lanka, at that time Vishnu make like he did something and it became evening. The light was gone, and at that time he just put this idol of Shiva over here and he started worshipping over here. So that's how this place was known for. That's how this place is known for. And after that, this place is known as Murudeshwara, and people worship this place called the Lord Shiva. This is how this place, Murudeshwara, this one you can see. Then Ganuvanteshwara, Dareshwara, Sajjeshwara, Gokarna. So these are the 5 places you need to visit if you are coming over here. It's a one-day trip, so actually we are late today. So that's why we are not able to visit all the places. We just visit Murudeshwara. So you can come and visit. This is a very beautiful place. You can see this is the place which is surrounded by this place. Few rocks you can see if the camera is justifying over there. Some rocks in the sea. ये अगवादा से सुंदर है। इसका यहाँ पे जो अगवादा फोर्ट से खूबसूरत पहाड़ का जो पत्थर का देख रहे हो वहाँ पे इतना सुंदर लग रहा है ना। This is the back side of Murudeshwar Devasthanam, and at his back side this is the sea, as you have already seen this view. तो अगर आप लोगों को ये जगह अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। कोई इधर उधर का बात मैंने बोला नहीं है और हेडफोन डालने की कोई ज़रूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके, और बेल आइकन दबाएं क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पे यहाँ का बहुत अच्छा पिक्स है। और ये आप देख सकते हो गोल्डन चैरियट जो मैंने आप लोगों को नीचे दिखा रही, ये चैरियट है श्री विष्णु जी का। और ये व्यू आप एंजॉय कीजिए। इस साइड पे पार्क है, अभी फ़िलहाल ये जो है बंद है, यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। और वहाँ पे आप सूर्य देवता देख सकते हो आगे। शायद कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा मुझे पता नहीं, बट या दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। समुंदर का तो व्यू हमेशा ही खूबसूरत होता ही है। तो ये कहाँ गए? ये देखिए
आखिरी दर्शन कर लीजिए आप लोग। 80 का कथा। This is another statue of Lord Shiva. In here, this looks beautiful. Beautiful Lord Murudeshwara. So, if you guys liked this video, do subscribe and do like. This is the 360 view of this place. तो अब हम आए बीच पे दोस्तों, आप देख सकते हो। This is the view of this complete place. As you can see, this is the Gopuram. Raja Gopuram, na? Raja Gopura, and that is Murudeshwar Mahadev statue, Shiva statue. And just beside to that, this is the beach of Murudeshwara. You can see the tides are coming, people are enjoying over this place. जबरदस्त है भाई, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, आप बोट पे घूमने जा सकते हो, आप जेट स्की कर सकते हो। आई होप बनाना बोट भी होगा यहाँ पे। और बहुत सारे शॉप्स वगैरह हैं यहाँ, अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो तो वो भी है। फास्ट फूड एंड ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आई होप प्राइस मैंने चेक नहीं किया। So here is the sea, and as you can see we are in the sea now. और टाइड वगैरह आ रहे हैं, उतना ज़्यादा जोर का नहीं है, बट हाँ है। तो आप लोग आ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग वगैरह हो रहा है, तो आप भी आके एंजॉय कर सकते हो। प्राइसिंग वगैरह मुझे नहीं पता। जगह बहुत खूबसूरत है, आप आके एंजॉय कर सकते हो एक दिन पूरा। ओके गाइस, तो हम आए थे घूमने, आप लोग देख सकते हो फैमिली, ये भाई है, भाभी है, मेरी वाइफ है। तो वीडियोस लाइक ज़रूर करना। बहुत और अच्छा प्लेस है, बिल्कुल 1 लाख प्लस होना चाहिए वीडियो सब्सक्राइबर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे। बाय गाइस, मस्ट विजिट दिस प्लेस। बाय 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 कर दिए, बाय बोल दीजिए, बाय।